Once again, welcome back to my YouTube channel, Unique Eduvision. Good morning, everyone. I hope you all are well and safe at your places. As today's topic is verbs, singular and plural. In this video, we will discuss that where we will use the singular verbs and where we will use the plural verbs. इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलर वर्ब्स के बारे में एंड प्लूरल वर्ब्स के बारे में. कहाँ हम लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाना है, कहाँ हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड लाफ्स एट क्लोन एंड द सेकेंड वन इज द चिल्ड्रन लाफ एट क्लोन. You can see in the first sentence, laughs is a singular verb because the subject child is a singular subject. And in the second sentence, you can see the children is plural subject. So you need the plural verb that is laugh. So from here, you can understand that there is a contract between the subject and the verb of the sentence. If there is a singular subject, you have to use singular verb. If there is a plural subject, you have to use plural verb. इन sentences में आपने देखा कि child जो था हमारा the child, वो एक singular subject था जिसमें हम लोगों ने verb भी singular लगाई है, that is laughs. और second sentence में देखा जाए तो आपका subject क्या है, plural. इसीलिए हम लोगों ने verb भी क्या लगाई, plural, laugh. Now rules. There are some rules to apply these things. So first is, if the subject in the sentence is singular, the verb should also be singular, as we discussed earlier. यहाँ कहा है रूल फर्स्ट जो आपको बताता है, कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. So let's discuss about the example. The dog lives in the park. You can see here the subject is dog. Dog is singular. So you have to use the verb singular that is lives. आप यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो डॉग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. सेम उसके साथ आप वर्ब क्या यूज करोगे, सिंगुलर. सो लिव्स इज अ सिंगुलर वर्ब. सेकेंड रूल, if the subject in the sentence is plural, the verb should also be plural. अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल लगेगी. सो लेट्स डिस्कस इन द एग्जाम्पल. द डॉग्स लिव इन द पार्क. डॉग्स हियर इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, दैट इज लिव. The verbs are already in plural form. जो already form verbs की होती है वो plural होती है बच्चा. And when we use s or es with that verb, it becomes singular. Now come on the third rule. Third rule is you always has a plural verb. You के साथ जो verb लगेगी हमारी always क्या लगेगी, plural. बिकॉज यू जो है चाहे वो सिंगुलर पार्ट से यूज कर रहे हैं चाहे हम लोग प्लूरल पार्ट से यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग द यू एज अ सिंगुलर और प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. यू कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यू आर इंटेलिजेंट. हियर यू इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ट्रीटेड एज सिंगुलर, सो वर्ब इज प्लूरल. तो ऊपर वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर यू आएगा, यू के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी. नाउ नेक्स्ट इज फैमिलीज. फैमिलीज ऑफ वर्ब. हियर आई कैन से दैट बी वर्ब फैमिली. बी वर्ब्स मीन्स हियर यू कैन यूज इज, एम, आर, वॉज, वर. सो सिंगुलर. पहले हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वेयर द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर. I, you, he, she, it. Treated to be singular. I always carry am.
I के साथ हमेशा हम am लगाते हैं. am किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है. और I के साथ अगर हम लोगों ने पास्ट में यूज करना है तो was आता है, because it treated as singular. You if you treat as a singular, it carries are. Sorry, if you treat it as a plural, you always carry plural verb. Plural verb के साथ क्या लगाओगे फिर? are. So here are and were. He, she, it, singular. Singular means एक person, एक noun की बात करेंगे, singular noun की, तो आप क्या लगाओगे? is or was. On the other side, if we talk about the plural subject and verb, if the subject is we, you, they, so you should use are or were. Are in present and were in past. So let's talk about how we use is, am, are in sentences. I already told you that I carries always am. So I am Fani Sharma. She subject is singular. Singular के साथ we use is. She एक singular subject है. Singular subject के साथ हम लोग क्या use करते हैं? Singular verb. That is. Our neighbors means हमारे पड़ोसी. तो पड़ोसी plural में आता है. So our neighbors are very cooperative. You should use are here because it's a subject is plural, so your verb should be plural. We are happy to see you. हमें बहुत खुशी हुई आपको देख के. So we carries always are, plural verb. Gold is a single type of metal, so here you have to use is. Next one is was, were. You have to use was, verb as per the subject. My grandfather, you can see here grandfather is a singular subject. Grandfather जो है एक singular subject है, एक person की बात की है, so you should use was. Was जो होता है वो single के साथ आता है, एक चीज के साथ आता है. verb बहुत सारी चीजों के साथ आता है. they means वो लोग कौन से? वो की बात करिए तो बहुत सारे हो सकते हैं. were. So we should use were. Tanu and Rajiv were good friends when they were in school. Tanu or Rajiv, two person we are talking about, so we should use were. And the fourth sentence, these bangles mean चूड़ियां, it becomes plural. Sorry, it's plural. So you have to use the verb plural, that is were. Next, Veena. Veena is singular subject, so you have to use was. So इस पार्ट में हमने डिस्कस किया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बट कौन सी फॉर्म? इज, एम, आर, वॉज, वर डिस्कस किया, जो कि बी वर्ब का फैमिली का पार्ट है. नाउ हैव वर्ब्स. हैव वर्ब ऑलवेज कैरी एच फैमिली. एच फैमिली मीन्स एच से स्टार्ट होने वाली वर्ब्स यहां आएंगी. हैज, हैव, हैड. Okay, but we are not talking about past, we just talk about the present. Okay, so I have, you have. You always carry plural verb as I told you. So here you should use have. He, she, it is a singular subject. So you have to use singular verb, that is has. And on the other side, plural subject carries always plural verb. Plural subjects are we, you, they. They will carry plural verb, that is have. So let's apply in the sentences. Fill in the blanks with the has or have. Sonali has a new laptop. Sonali is a single person. Single subject carries single verb. Singular verb is has. The basketball team. Yeah. Here you feel that you got confused. You may use here have, but it's wrong because we are talking about the whole team as a one unit.
हमने सारी टीम को एक नेम से रिप्रेजेंट किया है, सारे प्लेयर्स को, दैट इज टीम। तो एक टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हैज यूज करेंगे हम। वी हैव अ लाइब्रेरी फॉर द टोडलर्स इन आवर प्ले स्कूल। We is plural subject, so you have to use plural verb, that is have. They always carry have because they is वो लोग, वो के साथ plural. Father usually has breakfast at 7 a.m. Father is single, so single के साथ has. Let's talk about do verbs. Do carries always does and do. Where you have to use does, just keep in your mind where you have to do the things with the plural or the singular subject. Just you have to remember the one thing, that is does, where you use the does, otherwise you have to use do. Does is always used with singular subject when we talk about one person. जब हम एक person की बात करते हैं तब हम हमेशा does लगाएंगे, otherwise हम क्या लगाएंगे, do. Like he, she, it. With he, she, it only you can use does. Rest of carry do. Let's start with rewrite these sentences in the plural form. You have to rewrite these sentences means दोबारा लिखते हैं इन sentences को singular form से, एक से बहुवचन बनाना है. Okay? He is very attentive in class. वो क्लास में बहुत attentive हैं. They are very attentive in class. वह सारे क्लास में बहुत attentive हैं. तो she is converted to be they are. Second sentence is he writes very well. वो बहुत अच्छा लिखता है. They write very well. वो बहुत अच्छा लिखते हैं. They write. She does the work neatly. वो काम अच्छा करती है. They do the work neatly. वो अच्छा काम करते हैं. The garden is beautiful. The gardens are beautiful. You do your homework now. Converted to be all of you. Do your homework now. तुम सारे अपना homework अभी करो. So this is all about your topic verb singular and plural. So here's a time for asking questions, which is really my favorite part, because in this I can check your level of understanding, how much you can get from my videos and lectures. So the question is, you have to tell me about be verbs and have verbs. You have to tell me about the be verbs and have verbs. You can give your answers in the comment box down in the video. Thank you everyone watching my video. Keep on supporting, keep on liking my videos. Bye bye.